Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 3, journal entries. Today we are going to start with question number 10 from practice problem, page number 87 or 88 maybe. Moving towards the question and the solution part. Right hand side, you can see question number 10 is given. Journalize the following transaction in the books of Harbhajan and Company for the month of 1st April 2019. तो अप्रैल मंथ के लिए हम लोग को यहाँ पर वर्कआउट करना है और सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस. यू पीपल ऑलरेडी नो कि इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बैलेंस का जर्नल एंट्री कैसे आएगा. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ डेट ऑन 1st अप्रैल. सबसे पहले जो डेबिट का टोटल है वो हम लोग मार्क करेंगे. सो कैश इन हैंड इज देयर, सो कैश अकाउंट डेबिट. Then we have cash at bank. We can write bank account debit. Then we have furniture account debit. Laptop account debit. Then we have two daters here, Sangeeta and Viru. So daters account in the bracket Sangeeta 40,000 plus Viru 30,000 bracket close debit. So accordingly cash is how much? 35,000. Bank 25,000. Laptop, sorry, furniture we have 1,50,000. Laptop we have for 1 lakh. And daters including Sangeeta and Viru, it is 70,000. Okay. Now moving towards the liability part, we will write on the credit side to Ganesh and Garima as a creditor. There are two creditors with us, Ganesh and Garima. So we will write to creditors account into bracket Ganesh 10,000 plus Garima 40,000 bracket close. So 10 plus 40 it is 50,000. Then we have bank loan. So to bank loan account amount is 50,000. So done with assets and liability side, we will take the total of asset. So total is 3,80,000 और liability side का सिर्फ 1 lakh है, तो 3,80,000 minus 1 lakh, it will give us 2,80,000. और ये 2,80,000 को हम क्या कंसिडर करेंगे? कैपिटल अकाउंट. सो इन दिस मैनर ये जो बैलेंस का जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हुआ. बीइंग बैलेंस ऑफ assets and liabilities are carried forward, or we can write brought forward instead of carried, brought down.
So next, on 1st April, we are starting with the business transaction. Purchase of goods from Ajay Kumar worth rupees 2,50,000. Okay. At 10% trade discount and 18% GST and paid 1/4 amount in cash. अब इसका पहले हम क्या कर लें, वर्किंग नोट बना लेते हैं. तो गुड्स अजय कुमार से हमने परचेस किया 2,50,000. तो हियर आई एम राइटिंग वर्किंग नोट नंबर 1. Goods purchased for 2,50,000. और उसके ऊपर you can check trade discount is allowed at the rate 10%. So we can write over here less trade discount at the rate 10%. So 2,50,000 का 10% is 25,000. 2,50,000 minus 25, 2,25,000. तो ये 2,25,000 पे हमारा डील डन हुआ है. ठीक है. अब इसके अंदर भी पेमेंट देखिए, आप देखेंगे पेड 1/4 अमाउंट इन कैश. 1/4 जो अमाउंट है वो कैश में पे किया गया है. ठीक है. तो पहले हम क्या ऐड कर देते हैं इसमें, जीएसटी. ऐड जीएसटी. अभी जीएसटी के दो पार्ट हो जाएंगे, एक सीजीएसटी एट द रेट 9% and SGST at the rate 9%. ठीक है. So calculate 2,25,000 into 9%, 20,250. 20,250. ये क्या आ गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी. ये ऐड कर देंगे इसमें एंड द टोटल इज 2,65,500. 2,65,500. Now 1/4 amount is paid in cash. So दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक है 1/4, एक है 3/4. यहां पर मैं लिखता हूं 1/4 एंड हियर आई कैन राइट 3/4. ठीक है. So 2,65,500 into 1/4, that will give me 66,375, and remaining part is 1,99,125. ओके. सो ये दो अमाउंट मुझे यहाँ पर मिलता है, ये कैश बेसिस पे है और ये जो है वो क्रेडिट बेसिस पे है.
सो दो वैल्यू हमारे सामने है, एक कैश है और दूसरा क्रेडिट है। हमने ऊपर देखा हमें क्या मिल रहा है साथ में, यहां पर क्या कोई कैश डिस्काउंट दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट के बाद? नो, नथिंग इज मेंशन। सो कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमको यहाँ पर मेंशन करना है। क्रेडिट साइड जो सॉरी जो क्रेडिट में अमाउंट आया है उसमें अजय का नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा? अजय कुमार। सो अब ये जो वर्किंग हमने प्रिपेयर किया उसका जर्नल एंट्री हम पास करते हैं। तो सबसे पहले हमने गुड्स किससे परचेस किया? अजय से परचेस किया है। सो वी विल राइट ओवर हियर 1 अप्रैल परचेसेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट है और क्योंकि इस पे जीएसटी हम पे कर रहे हैं तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो ये जीएसटी हमने चार्ज किया टू अजय अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो परचेस का वैल्यू था वो था 2,50,000। इनपुट सीजीएसटी वाज 20,250 20,250 एसजीएसटी और कैश में हमें अमाउंट आया है 66,375 और आप देखिए अजय को अभी अजय से पैसे लेना सॉरी अजय को पैसे देना बाकी है। कितने? 1,99,125। ये अजय को पेमेंट करना बाकी है। हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड जीएसटी पेड। Now next transaction is on 5th April. 5th April. परचेस्ड शेयर ऑफ इन्फोसिस कंपनी। इन्फोसिस कंपनी के शेयर परचेस किए हैं वर्थ ₹50,000 एंड 500 पेड एज ब्रोकरेज बाय डीमेट अकाउंट। तो जब हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं किसी के कंपनी के शेयर, दैट मीन्स वी आर परचेसिंग इन्वेस्टमेंट। क्या परचेस कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हेंस एंट्री विल बी व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ इन्फोसिस। क्योंकि कंपनी का नाम दिया है तो हम भी यहाँ पर मेंशन कर दें इन्फोसिस अकाउंट डेबिट। ये हमने परचेस किया है और ब्रोकरेज पे किया है तो ब्रोकरेज भी परचेसिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 50,500 टू
क्योंकि ये डीमेट अकाउंट से गया है तो डीमेट अकाउंट से सारे पेमेंट बैंक के थ्रू जाते हैं, सो वी विल राइट बैंक अकाउंट 50,500 being investment purchased. सो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया है, और हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट वन इज ऑन 8th अप्रैल। So on 8th April, sold goods to Raj worth rupees 90,000. 90,000 रुपीज का गुड्स क्या किया, सेल किया। गुड्स जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स क्या है, इनकम, ठीक है ना। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड 5% कैश डिस्काउंट इज अलाउड। अब यहां पर भी हम इसको वर्किंग के थ्रू शो करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 2, हमारे सामने है सेल्स और सेल्स का वैल्यू है 90,000। जस्ट चेक, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 1/3 अमाउंट हमें इमीडिएटली कैश में रिसीव्ड हो गया। सो लेस करेंगे 10%, दैट मीन्स 9,000। वी विल राइट ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। सो 9,000 इसमें से रिड्यूस किया जाएगा और लेस करेंगे तो 81,000 में हमारा डील फाइनल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 81,000 है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1/3 एंड 2/3, ठीक है। सो 1/3 अमाउंट वी हैव रिसीव्ड इन कैश एंड 2/3 is still on the credit basis. So here we will write cash, और किसको सेल किया था हमने, राज है तो राज का नाम आ जाएगा, ठीक है। सो 81,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 27,000, और 2/3 जो होगा दैट इज 54,000, ठीक है। तो इस पे 5% कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट 5%। सो 27,000 का 5% कैलकुलेट कीजिए, इट इज 1,350। रिड्यूस करेंगे 25,650 is the final figure what we are going to receive in cash, ठीक है। तो इसकी एंट्री अब कैसे पास करें, तो सबसे पहले हमारा डील किस पे डन हुआ था, 81,000, ओके, और हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, सो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश कितना रिसीव हुआ चेक कीजिए, 25,650, 25,650 वी हैव रिसीव्ड द कैश। इसके बाद हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने अमाउंट का दिया,
1350 रुपीज का, राइट है। बाकी 54,000 के लिए राज हमारा बन गया डेटर, उससे पैसे लेना बाकी है। सो 54,000 हम यहां पर मार्क करेंगे राज अकाउंट। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है ये अभी भी राज से लेना बाकी है टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स में वॉल्यूम आ जाएगा 81,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राज। गुड्स क्या किया, सेल किया मिस्टर राज को। So after 8th April, next is 12th April. तो 12th अप्रैल को मार्क करते हैं। पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट रुपीज 5,000। हाउस रेंट है और ऑफिस रेंट है। सो पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9,000। हाउस रेंट प्रोपराइटर के घर का रेंट पे कर रहे हैं, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया। क्या काउंट होगा, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 9,000 होगा और ऑफिस रेंट 5,000। वेरी इजी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 9,000 एंड ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 14,000 being expenses paid and drawing made by proprietor. After 12th April, 15th April, 15th April, you can see what is given. Purchased laptop of rupees 60,000 at the rate 18% GST and paid amount by check. तो पूरा अमाउंट पे किया है, परचेस किया हमने लैपटॉप। तो एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पर, एंट्री विल बी लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट CGST at the rate 9% account debit input SGST at the rate 9% account debit to बैंक अकाउंट, है ना। बैंक से हमने पे किया मतलब चेक दिया है। सो लैपटॉप का अमाउंट था 60,000 and you will calculate 9% on 60,000, that is 5,400.
and total comes to 70,800. Being laptop purchased. So done with transaction number 15th April. Moving ahead with 20th April. 20th अप्रैल को चेक करो क्या दिया है. पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव लैपटॉप. अबव लैपटॉप पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे किया गया है 1000 रुपीज और 18% जीएसटी भी है. So what will be the answer? So ये जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने गुड्स पे नहीं किया है, हमने लैपटॉप पे किया है. असेट क्रिएट हुआ है तो ये असेट के कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा. सो वी विल मार्क लैपटॉप अकाउंट डेबिट. लैपटॉप के अकाउंट में ही अमाउंट डेबिट होगा एंड द अमाउंट इज 1000. अगेन वी विल चेक इनपुट जीएसटी एट द रेट 9%. तो 1000 पे 9% इज 90. 2 we can write cash or bank account. We don't know exactly how he had paid, so cash or bank account, and total is 1180. Being transportation charges is paid on laptop. Twenty-fifth April, very simple. Paid commission 20,000 to राम. राम को 25,000 sorry 20,000 कमीशन पे किया है. So commission is expense, so commission account debit 20,000 और ये पेड है तो टू कैश और बैंक अकाउंट. Being commission paid. Being commission paid and the amount is 20,000. Okay. Similarly 26th है paid telephone charges, तो सेम आ जाएगा. 26th April we will write telephone charges account debit to cash or bank account, and the amount is 1000. Being telephone
चार्जेस पेड। सो 28 अप्रैल को क्या हुआ, हमने अपने प्राइवेट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया फ्रॉम बिजनेस अकाउंट, है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट। मतलब प्राइवेट बैंक से बिजनेस के अकाउंट में पैसे आए, तो मतलब हमने बिजनेस को पैसा दिया, और बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल, है कि नहीं। तो यहां पर आप लिखेंगे कैश, नॉट कैश एग्जैक्टली, वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में पैसा आया और वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल। सो हमारा नरेशन होगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग, या आप लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। on 30th April, next transaction is on 30th April। 30th अप्रैल को देखिए, बॉट गुड्स ऑफ रुपीज 1,50,000 एट 12% एस जीएसटी बाय चेक। तो पेड है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इजी, बॉट गुड्स से मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेस किया हमने, 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अच्छा रेट ले लेते हैं हम, 6% आ जाएगा। सो 1,50,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 9,000 टू बैंक अकाउंट। So total is 1,68,000 being goods purchased being goods purchased। And last transaction 30th April, exchanged our furniture of rupees 30,000 against a motor car of the same value for business। ये क्या हो गया, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है ना। बार्टर एक्सचेंज, हमारे फर्नीचर के बदले में क्या लेकर के आए, मोटर कार लेकर के आए 30,000 का। तो फर्नीचर गया, मोटर कार आया, ठीक है। सो एक्सचेंज आवर फर्नीचर, 30,000 का फर्नीचर हमने एक्सचेंज किया, तो पहला आ जाएगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 30,000 being
motor car purchased. Now just take the total after completing this particular question. And the total is 11,46,980. ओके, समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। हमने यहाँ पर ये जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है वो फिनिश किया। आप आगे के जितने भी इलस्ट्रेशन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर लेजर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।